Hello everyone, in today's video we are going to talk about what exactly is asynchronous JavaScript. Okay, so whenever someone asks you, or like even at the starting of the JavaScript, when I explained you that what exactly is JavaScript, I always mentioned that JavaScript is a synchronous programming language. It is a single threaded programming language, right? But there are few scenarios where JavaScript starts behaving asynchronously. Okay, so I'll just give a very small brief about what exactly is synchronous and what exactly is asynchronous. Okay, so for example, if I have 1, 2, 3, 4 lines of code. Okay, first this line got executed, then this, and then this. Okay, which means your execution of code is line by line, line by line, and line by line. Okay, if your code is getting executed in this way, that means your code is basically a synchronous programming language, or your programming language is being executed in a synchronous manner. ठीक है, line by line आपका code execute हो रहा है. This is known as your synchronous programming language. Okay, पर अगर in the same scenario, if you have these 4 lines of code, once again, first this line is getting executed, then this, and then somehow this line is getting executed. Okay, which means हम लोग ये नहीं कह सकते हैं that the code is getting executed line by line. No, just in case इस fourth line पे something happened at this fourth line, at this fourth statement, जिसने कोड एग्जीक्यूशन को ब्रेक किया, एंड देन इट ब्रॉट इट बैक अगेन टू द फोर्थ लाइन. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज दे आर नोन एज अ सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि जावास्क्रिप्ट, अगर आप नॉर्मली कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछता है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज जावास्क्रिप्ट, यू विल ऑलवेज से दैट जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, दैट इट इज़ अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, but there are few situations where JavaScript starts behaving like asynchronous. Okay, तो वो कौन से scenarios है जहाँ पर JavaScript आपकी asynchronous way के अंदर behave करती है. The most important thing is like कि जब भी आप network calls करते हो, which means whenever you are making any backend API call. Okay, you are fetching data from the database. Okay, आप database से जब data fetch करके लेके आते हो, so those are the मतलब the most practical एंड द मोस्ट कॉमन सिनेरियो जो एग्जिस्ट करता है दैट वन, जहाँ पर आपका जावास्क्रिप्ट को हम लोग द वे हाउ वी राइट द कोड, हम लोग उसको असिंक्रोनस वे में लिखते हैं. वाई डू वी से वो असिंक्रोनस वे? बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल. फ्रंट एंड इज़ नॉट इन द कंट्रोल एनी मोर. बैक एंड इज़ गेटिंग द डेटा. नेटवर्क सर्वर आपका डेटा फैच करके लेके आते हैं कहीं और से. सो यू डोंट नो कि कितना टाइम लगेगा वहाँ पे, राइट? सो यू व्हेन यू डोंट नो द अमाउंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू टेक, दैट स्पेसिफिक स्टेटमेंट आपका असिंक्रोनस बन जाता है. ठीक है, सो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर API कॉल्स is the most common example for the asynchronous behavior of the code. Okay, but directly API calls मैं बस एक example दे रही हूँ. ठीक है, like आई एम नॉट सेइंग कि API कॉल ही बस एक इकलौता सिनेरियो है. नहीं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि दैट हाउ एग्जैक्टली असिंक्रोनस बिहेवियर स्टार्ट हुआ जावास्क्रिप्ट के अंदर, फ्रॉम द हिस्ट्री कि पहले क्या होता था, एंड देन व्हाट प्रॉब्लम्स केम अप, एंड देन उस प्रॉब्लम को हमने किस तरह से रिजॉल्व किया, एंड देन फाइनली देन व्हाट हैपेंड, एंड उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर, and now what exactly is the best possible way of writing any asynchronous calls or any asynchronous way of writing code. Okay, so what is the very first step is that, like, let's write it down here only, that you have very first of all you start with setTimeout. ओके, सेट टाइम आउट आप एक तरह फंक्शंस जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सेट टाइम आउट होता है, जिसके साथ में आप सेट टाइम आउट के साथ में एक कॉल बैक फंक्शन पढ़ते हो. आई होप इट इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन. सेट टाइम आउट के साथ में आप लोग कॉल बैक फंक्शंस पढ़ते हो. ओके, इसी के साथ में आप लोग क्लोजर्स भी पढ़ते हो. सो ऑल दीज 3 थिंग्स हम लोग कंबाइन करेंगे और इकट्ठे पढ़ेंगे. ऑल दीज 3 थिंग्स कंबाइंड. ओके, इन सब चीज़ों से लाइक वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, सो वी इंक्रीज द नंबर ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारे सेट टाइम आउट इंक्रीज़ किए, हम लोगों ने बहुत सारे कॉल बैक फंक्शंस ऐड, कीप ऑन एडिंग द कॉल बैक फंक्शंस, कीप ऑन क्रिएटिंग द क्लोजर्स. ओके, तो जब हम लोगों ने ये चीज़ की, सो वी end up into creating something which is like, let me write down the problem, we end up creating something which is known as callback hell.
ओके, सो ये एक प्रॉब्लम है. सो कॉल बैक हेल इज समथिंग जो कि एक प्रॉब्लम बन गई, एंड नाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैड टू डू समथिंग एल्स जिससे हम लोग इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके और असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को प्रॉपरली हैंडल कर सके. ओके, सो नाउ टू रिजॉल्व दिस थिंग, देन अगेन व्हाट वी केम अप विद वाज promises. ओके, वंस द प्रोमिसेस, जब हम लोगों ने मल्टीपल स्टेटमेंट्स आने लगे कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. से एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने यूज़र को एक्सेस करना है, लाइक यूज़र इज़ गेटिंग लॉगिंग इन टू योर एप्लीकेशन इन योर वेबसाइट. ओके, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक लाइक इफ द यूज़र इज साइंड इन और नॉट, देन you will check like if he is a correct user or not. Okay, so one after the another only you will make the another call. Okay, then once the user is signed in, once the user is a correct user, then you will make another call saying okay fine, fetch all the products related to this user. Okay, so this is a nested call, है ना. So this is a nested call. So to handle these kind of scenarios we have these promises, we have this callback hell and all of these functions. Okay, सो जब आप बहुत सारी प्रोमिसेस ऐड करते हो इन द नेस्टेड फॉर्मेट एंड सो ऑन, तो आप लोग यू एंड अप इन समथिंग विच इज़ नोन एज प्रॉमिस चेनिंग. ओके, विच इज़ अगेन ए इशू. तो आप लोग यू एंड अप इन टू प्रॉमिस चेनिंग. एंड द फाइनली एंड द बेस्ट वन, जब भी आपको प्रॉमिस चेनिंग को भी रिजॉल्व करना है, एंड द बेस्ट फॉर्मेट एंड द बेस्ट सोल्यूशन दैट वी हैव इज़ नोन एज योर async एंड देन await. Async, await. Okay, await like this. Okay, so this is the flow that we have. तो हम लोग step by step पढ़ेंगे. In today's class, in today's video we will talk about कि set timeout, callback और closures का combination बन के that how exactly JavaScript behaves like a asynchronous JavaScript. Okay, so let's quickly go inside the code and let's read about it कि किस तरह से ये वर्क करता है. ओके, सो आई हैव क्रिएटेड अ simple file over here, index.javascript. Let me just write down this code once again so that I can explain it properly. Okay, so what we will do over here is that हम लोग एक statement लिखते हैं. For example, console dot log before set timeout. Okay, then we will implement set timeout and then later we will write down after set timeout. Okay, before these two statements we will write down the set timeout function. So set timeout, for example if I have given, so basically set timeout function दो parameters accept करता है. very first is your callback function. ये जो होता है आपका ये callback function होता है. यहाँ पे जो ये small first parameter which it takes, this is your callback function. Okay, this one is your timeout. Timeout means के like whatever the value that you will give over here कि like 5000 milliseconds, which means 5 seconds के बाद में whatever you have written inside this function वो will get executed. Okay, so this is known as your set timeout function. Okay, so 5000 would be too much. Let's reduce it to 2000. So after 2000 seconds, after 2000 milliseconds, which means 2 seconds, this function will get executed. Okay, what exactly is this function? This function is a callback function. What is a callback function? A function जो कि किसी और function में as a parameter pass होता है. Okay, please make sure कि if you don't know what is callback function, please watch that video. वीडियो नहीं देखना है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड फ्रॉम वेर एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, पर कॉलबैक फंक्शन पता होना ज़रूरी है. इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो ये जो फंक्शन है आपका वेर यू आर पासिंग दिस एज अ parameter into another function, this is known as your callback function. Okay, now inside this callback function I will just simply say that inside set timeout. Okay, that's it. So normally एक synchronous programming language, how it will behave like, first of all you go over here, print before set timeout, है ना. फिर आप यहाँ पर आए, you will be waiting for 2000 millisecond. आप इसको execute करोगे. Once inside set timeout is completed, then you will jump to the next statement after set timeout should be implemented. ठीक है, तो एक normal synchronous programming language आपका यही कहती है. पर when we are running this file, आपको कोई भी JavaScript फाइल को रन करना हो तो write down node index.js. ओके, जब आप इस फाइल को रन करोगे you will see सबसे पहले आता है आपका before set timeout, then after set timeout and then inside set timeout. ओके, हम इसको एक HTML फाइल के अंदर भी ब्राउज़र में भी ऐड कर सकते हैं. लेट्स राइट डाउन
एंड देन स्क्रिप्ट टैग ऐड कर देते हैं एंड देन लेट्स से index.js. ओके, कॉपी द पाथ ऑफ द फाइल, गो टू अ ब्राउजर एंड देन ओपन इट ओवर हियर एंड देन ओपन द कंसोल. ठीक है, सो यू विल नोटिस ओवर हियर कि सबसे पहले आपका बिफोर सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट हुआ, फिर इनसाइड सेट टाइम आउट नहीं एग्जीक्यूट हुआ, देन आपका आफ्टर सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट हुआ विच इज़ दिस वन. ओके, एंड देन एग्जीक्यूट होता है आपका इनसाइड सेट टाइम आउट विच मीन्स वो 2000 सेकेंड्स के बाद में, 2000 मिली सेकेंड्स के बाद में फिर वो इनसाइड सेट टाइम आउट इंक्रीज हुआ. सो दिस इज़ वॉट इज़ नोन एज योर असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट. ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्यों हो गई, क्यों जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनसली बिहेव कर रही है. ओके, सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर आपका जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनस वे में बिहेव कर रहा है. नाउ इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, कैन वी स्टॉप दिस और नॉट, हमें इसको सिंक्रोनस करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है, we will be understanding all these kind of things in the coming videos. Okay, so this is the very first step of understanding what exactly is asynchronous behavior of JavaScript. Okay, next video में we will talk about कि set timeout को use कर करके how do you land up into a callback hell. Okay, one more thing, that what exactly is closures. Okay, for example, like if I have created a variable over here, let a is equals to 20. Okay, and inside this I am trying to print this value. Okay, so जब आप इसको reload करोगे, before set timeout, after and then inside set timeout. तो ये जो फंक्शन है आपका, दिस कॉलबैक फंक्शन, बेसिकली कपलिंग करता है. इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट. उस एनवायरनमेंट को हम लोग लेक्सिकल एनवायरनमेंट वी से. ओके, जब आप ये लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं देन ओनली इट इज़ एबल टू एक्सेस द वेरिएबल्स विच आर डिफाइंड आउटसाइड. ओके, सो ये ए वेरिएबल आपका आउटसाइड डिफाइंड है, इसलिए उसको एक्सेस करके उसका वैल्यू प्रिंट कर पा रहा है. सो दिस इज हाउ इट फॉर्म्स अ क्लोजर. सो वी हैव रेड अबाउट 3 थिंग्स: set timeout, callback functions, closures, and we have also understand about what exactly is the asynchronous behavior of JavaScript. That's it for this video. Thank you so much for watching, and yeah, that's it.